Okay. So just to summarize what we have studied yesterday, so completed a NumPy and then started with pandas, right? So let me share my screen. So yesterday we started with pandas. Few properties we discussed: open source, powerful, easy to use, right? And it is built on top of C and Python. Okay. And majorly why we are using pandas is because in the NumPy, which we saw some drawbacks, such as every time we need to create an array, irrespective of number of dimensions, we need to create an array every time. So to overcome that drawback, what we did is we started using a pandas. So pandas, we have a different data structures according to a data. So suppose you have only single column, okay, one column, then you can use a series. If you have multiple columns, जो हमने कल एग्जांपल देखा था जहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स थे एक एक्सेल फाइल में, so वो मल्टीपल कॉलम्स के बीच आपको रिलेशन बिल्ड करना है तो then you use a data frame, okay. And if you have higher order dimensions, then you can use panel, one more data structure. So then we started with regular installing pandas. So how you install? It's called pip install pandas. So this command remains same irrespective of any library you use. Okay. In the library, you can put a name of the library, as in which library you want to install. You can mention it here. Then import pandas as PD, import numpy as np. These are the alias we give for those uh, what we say libraries, because every time writing pandas is difficult. So what you do, you use a short name or nickname. So pd.series. So if you want to create a series, by creating you can create using list. So pass that series as a function, उसमें आप list pass कर सकते हो. So you get this output. This is nothing but a series, right? और सीरीज का टाइप हमने चेक किया था, इट्स कॉल्ड पांडा core डॉट सीरीज, राइट? Series 2 and series, uh, again, so we saw some index name, few more parameters, data type. Float 32 is data type because we want to optimize the memory usage depending upon integer 8, 16, 32, 64, its usage. We can control the data types. ओके, तो उससे क्या होगा कि मेमोरी ऑप्टिमाइज होगा अपना, क्योंकि रेगुलर इंटीजर और रेगुलर फ्लोट स्टोर्स values up to 32 cr or more than 32 crores, so that value is not required to us currently. So what we do is we reduce the memory optimization, we reduce the usage by converting it into a smaller data type such as integer 8, 32, 64, right? और वो कैसे करना है, that we can directly mention d type is equal to float 32. Then we used dictionary as well, like dictionary का यूज करके हमने सीरीज बनाया था pandas का, right? So you can see key will be converted into index and values में पूरे वैल्यू जाएंगे. Series, you can see this. This is nothing but index, ये automatically create हुआ है and these are our values, right? ये देखिए series 76 I am creating, but index मैंने 10 index दिया है, total 10 index. So what it will do, it will store the same value in each index. 76 हर जगह पे store करेगा जितने भी index है उसमें. This is the name, this is the data type. Okay. So then we saw how to indexing and slicing. मतलब सीरीज का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में एक 1 पास करोगे तो यू विल गेट अ 30. इट्स कॉल्ड इंडेक्सिंग. हमने इंडेक्स करना सीखा था. इट इज सिमिलर टू लिस्ट, सिमिलर टू टपल, सिमिलर टू स्ट्रिंग. ओके. Then we saw the slicing. If we want to cut the, sorry, oh, okay,
Just a second. Okay, if you want to cut in between the index, means you want to break this index between certain values, such as मुझे 2 से 4 तक ही जाना है और 2 से 3 तक जाना है. So what I can do, I can use a slicing, right? Slicing में क्या करते हैं, start, end, -1 and step. This logic we have studied multiple times. Odd and even numbers generate करना and few more functions, right? यहाँ पे देखिए 382, मतलब 3 से स्टार्ट होगा, 8 - 1 7 पे एंड होगा और स्टेप रहेगा 2 का. स्टेप मतलब it will skip one value, so 3, then 5, then 7, because 3 minus 2 3 minus sorry 5 minus 3 is 2, right? That is nothing but a step. Hope this everything is clear up to this point. So today we'll start with the mathematical operations. मतलब create कैसे करना है ये हमने देखा सीरीज, देन सीरीज को एक्सेस कैसे करना है यूजिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ये देखा. आज हम देखेंगे इंडेक्स के ऊपर के ऑपरेशंस, मैथमेटिकल, लॉजिकल, and then we will see the methods used in the index series, and then we'll start with some other data type, right? ऐसे ही सीखा था हमने, like असंच शिकत होतो, right? प्रत्येक डेटा टाइप आपण, and in between we used a logic or we used a program. Clear? Yes, no? Okay. Okay. Yes, sir. So mathematical operations, so we'll create first two series, which is series 5 and series 6, pd.series. This is series 5. It has 10, 30, 56, 78, some numbers. And then series 6, which has 56, 87, 34, so on and so forth values. Let me run this cell. Mathematical operation में क्या रहेगा? Addition, subtraction, division, multiplication. All these are mathematical operations. So we can directly do all those mathematical operations. If I add series 5 plus series 6 और मैंने print किया तो I will get addition 56 plus 10 66, right? Clear? Addition. But interesting thing देखिए इन दोनों का ऐड होगा, यहाँ तक ऐड हो जाएगा, so you will see the addition. But if you try to add these numbers, we don't have anything here, right? इधर जो ब्लैंक दिख रहा है आपको और वैल्यूज नहीं है, वहां पे इट स्टोर्स अ नल, ओके, कॉल्ड नल. नल, नल, कॉमा नल, this will be there, null रहेगा. And interesting thing about null is if you try to add anything in this null, means suppose in our case it is 56 plus null है, तो आउटपुट आंसर इसका हमेशा null आता है. Any operation you do on the null, you will get output as a null. Okay? Just a second. So any output on the series, any output on the null, so it's a null. त्यामुळे इथे null आलेला आहे. You can see nan. Nan is nothing but null in Python. And null is in the SQL. This is null is from SQL. In Python it is a nan, not a number. Full form त्याचा. Okay. त्यामुळे when you are adding any two series, then you need to make sure all the equal elements आहेत त्याच्यात. ओके. SQL मध्ये पण हेच शिकलाय राईट तुम्ही? SQL मध्ये पण जेव्हा null व्हॅल्यू वरती कोणतेही ऑपरेशन करतो, आउटपुट विल ऑलवेज बी अ null. Yes, no, can anybody confirm? SQL झालं? हाँ सर आहेच. Okay. Okay. Hope you Hope you
डबल आवाज इको येतोय मला. हॅज एनीवन टर्न्ड ऑन देअर माइक? ओके ओके, नॉट एन इशू, इथं नाही आहे. चलो. So series plus addition. Then we have a different operation called minus. Minus करून बघा एकदा. You will get a minus values, right? Negative values. It will subtract series 5 from series 6. Then you have multiplication 560 260, and then you have a division operation, right? Yes. Okay. So division operation is there, right? And if you try to divide any series by a number, also you will get a result. Can anybody tell me what is this operation? इथे काय होते नक्की? We have studied this property. म्हणजे अरे मध्ये numpy मध्ये पण अरे वरती आपण काही ऑपरेशन्स करायचो, राईट? And the operation it used to have, like, it used to add all the numbers in that one number, as in it used to be executed on all the elements in the array. तर या प्रॉपर्टीला आपण काहीतरी म्हणतो. कॅन एनीवन टेल मी? सपोज तुमच्याकडे हा एक मल्टिपल असे नंबर्स आहेत इथं, राईट? यू हॅव सम नंबर्स हिअर, आणि या सगळ्यांवरती तुम्हाला एकच ऍडिशन करायचं, ऍड 5. तर हा नंबर इथे पण ऍड होऊन जाईल, इथे पण ऍड होऊन जाईल, इथे पण ऍड होऊन, इथे पण ऍड होईल, इथे ऍड होईल, इथे ऍड होईल, आणि इथे. सो इट विल ऍड this number everywhere. So what is this property is called? If in the Python you need to use a loop if you want to perform such operation, but here it is happening automatically, or it is happening by default. So what is this property is called? NumPy. Hope you are attentive during lecture. Broadcasting वगैरह काय आठवतंय? Do you remember broadcasting? Broadcasting कुछ पता चल रहा है आपको? ऐसे कुछ पढ़ा था? So this is nothing but a broadcasting. So 5 ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मतलब हर जगह पे जाके ऐड कर रहा है खुद को 5, राइट? यू डोंट हैव टू यूज अ लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ऐसा कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है. क्लियर? सो यहाँ पे डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट ऑपरेशन हो रहा है, हर एक एलिमेंट पे इट इज डिवाइडिंग बाय 11, राइट? और उसका आंसर आपको डायरेक्टली मिल रहा है यहाँ पे. सीरीज 5 आप चेक करोगे, इफ सीरीज 5 इज देयर, on all this number it is dividing by 11, or let's divide it by 10, maybe you will understand. See, क्या आएगा? 1, because 10 divided by 10 is 1, right? Hope you are able to correlate जो हमने सीखा है. So these are all mathematical operation. Now we will see logical operations. Logical operation, same, it works on the broadcasting principle. If I take series 5 greater than 30, so what will be the output? लॉजिकल ऑपरेटर का आउटपुट क्या आता है? इट विल ऑलवेज बी अ बुलियन, राइट? तो वो बुलियन आपको आउटपुट देगा इन द कंप्लीट सीरीज. ये देखिए, फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन 30 है क्या? नहीं, दैट्स व्हाई फॉल्स. सेकंड, नो, दैट्स व्हाई फॉल्स. थर्ड वैल्यू इज हायर देन 30, सो इट इज गिविंग एज अ ट्रू, राइट? लॉजिकल ऑपरेटर, होप यू आर एबल टू रिमेंबर पाइथन बेसिक्स. लॉजिकल ऑपरेटर का आउटपुट हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में आता है, राइट? So series 5 greater than 30, if it is true, then it will get a true or false. And this is nothing but a masking as well. Matlab, I want exact numbers hidden behind this true and false. So what I do, I will use a Boolean unmasking. ये हमने, we have learned this in NumPy, where we have mentioned I can series 5, in that series 5 I can pass this Boolean values, and I will get output true. Whatever output is there,
I will get output. Suppose it is greater than 30. So if I execute, जहां जहां पे true value है, see this true is starting from कहाँ से start हो रहा है, second variable से, right? Second index से till 8. So you will see here as well. देख सकते हो सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, एट्थ इंडेक्स पे खत्म हो रहा है, एंड यू आर गेटिंग एग्जैक्ट वैल्यूज, राइट? यस, नो? Okay, then say next operation, greater than or equal to, less than or equal to, double equal to. These are all logical operations you can do like this. Directly you will get output, right? एंड इसका टाइप आप देख सकते हो कि डेटा टाइप बुल है, बुल इनसाइड, देन इंटीजर. बाय द वे स्ट्रिंग के लिए व्हाट इट गिव्स, ऑब्जेक्ट. numpy pandas में स्ट्रिंग ऐसा कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट. इंटीजर, फ्लोट नहीं तो ऑब्जेक्ट. See, this data type object because John Doe, male are all the string, right? So that's why if you combine multiple data types, then you will have only object as a data type. So greater than 5. Then once you are done with the logical operator, next part becomes is methods, right? Mathematical, matlab we started with how to declare. Once the declaration is done, then how to access that data type. Then access करने के लिए we have studied index and slicing. Then we used different operators such as mathematical operators, logical operators. So once the operator are done, then we go with the methods, right? Functions and methods. हो string dot upper, string dot lower, हे string वरचे method होते, right? List वरती list dot min max. We have found out the min max numbers. So same methods इथे applicable आहेत. Such as series dot max असं लिहिलं तर what we will get? We will get a maximum number from that series. आपको कुछ programmatically you don't have to find anything. Like comparison करके कहाँ पे for loop लिखा है, if it is maximum then save that number into a maximum, right? Then next becomes a minimum is 10, series 5 dot min. So all these are nothing but methods on the series 5 dot sum. Directly you get addition of all the numbers. आपको you don't even have to write any code or any loop. That's why people use such libraries where all the functions are available. You don't even have to convert to any data type or anything. Directly you can start applying these functions, right? So series 5 dot sum, min, max. Then if you want to find out mean, that is also there. Not only mean, standard deviation, lot of functions are available. How you can find out which are there? So you follow the documentation. So documentation link is here. Before that, we'll cover a few more functions such as min, max. By the way, np.log, you can use numpy log function on the series as well. It is just an example की pandas is built on top of numpy, म्हणजे numpy pandas build numpy वरती झाले याचंच एक एक्झाम्पल आहे जिथं pandas मधले सिरीज जो डेटा टाइप आहे ना तो डेटा टाइप तुम्ही numpy मध्ये डायरेक्टली वापरू शकता. तर वन ऑफ द फंक्शन np.log, np.sum, np.min max हे जे फंक्शन आपण यूज केले दोज फंक्शन यू कॅन डायरेक्टली यूज. इथे तुम्ही बघू शकता जनरली आपण numpy मध्ये अरेज पास करतो, बट इथे आपण काय पास केले, सिरीज पास केला डायरेक्टली. सो विथ दैट ऑल्सो you get output, means numpy के सारे functions you can use in the pandas. Clear? So np.log, then you are passing a series, so that's why you are getting this output. This is a log of that all the numbers. Then series dot sum mean. So what I have found out, suppose data is equal to 10, 20, none, and 25, 30. So I want to find out count number of element present in that series. What I can do?
first of all I can create this list, a list है, right? Because we are using a square brackets यहाँ पे, and then values are separated by comma, right? So this is nothing but a list, and this list I will convert it into a series called series 6 pd.series data, and then that series 6 I am going to use count function. The count चे method है series 6 dot count, so I will get a count of a element 4. By the way, hope you are able to, इथं numbers 4 आहेत, total element 5 आहेत इथे, हे बघा. But I am getting output as 4 because it only counts the, apart from none बाकीचे data types तो count करतो. That's why you are getting a 4 as output. I want you to try it for the float and string, other data types. Okay? Possible, not possible. बाकीचे data types तुम्ही add करून बघा आणि मग series चा count घ्या, whether it counts or not. Okay? चालेल? You can take it as a. Okay, so next one is calculate the standard deviation. Standard deviation पण तुम्ही calculate करू शकता. How? Same data आहे, त्या डेटाला series मध्ये convert करा and त्या series dot std नावाचं एक function आहे. std is nothing but a standard deviation. So if you execute, you will get a standard deviation. Anyone from statistics वाले कोणी असतील तर त्यांना माहित असेल की standard deviation काय असतं आणि what is their formula. ओके, आणि हे तुम्ही डायरेक्टली इथे कॅल्क्युलेट करू शकता. सेम मीन मेडियन मोड, मेडियन पण तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता इथे. सो नॉट ओनली मेडियन, सेम डेटा आहे, हा डेटाला तुम्ही सिरीज मध्ये कन्वर्ट करून घ्या, त्या सिरीजला तुम्ही मेडियन डॉट मेडियन MEDIAN मेडियन हे फंक्शन यूज करू शकता, विच विल गिव्ह यू द मेडियन व्हॅल्यू, राईट? सो डायरेक्टली फाइंड आउट मीन मोड मेडियन मधला मेडियन तुम्हाला मिळून जाईल. नॉट ओनली दिस, युनिक व्हॅल्यूज तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. हाऊ? अगेन डेटा अँड कन्वर्ट दॅट डेटा इनटू सिरीज. सिरीज नावाचा डेटा टाइप जो आहे पांडास मधला, त्याला तुम्हाला यू नीड टू कन्वर्ट दॅट लिस्ट ऑर डेटा इनटू सिरीज डेटा टाइप. तर ते कसं करतात, pd डॉट सिरीज, pd डॉट सिरीज हे फंक्शन मधून तुम्हाला ते डेटा पास करायला लागतो, ऍज इन गिव्ह इट ऍज अ आर्ग्युमेंट. एकदा तुम्ही आर्ग्युमेंट पास केलं, देन यू विल फाइंड आउट युनिक. युनिक कसं, सिरीज डॉट युनिक, युनिक नावाचं एक मेथड आहे. बाय द वे, कॅन एनीबडी टेल मी व्हॉट इज डिफरन्स? कारण हे फंक्शन सारखंच दिसतंय ना, इथे नाव आहे आणि 2 पॅरेंथेसिस आहेत. This is similar to function. So what is the difference between method and function? Can you guys tell me what is the difference between unique and method and functions? Girish, Snehal, who are there? Don't know, sir. Okay, what about Sneha? What is different between function and method? By the way, हे function आहे की नाही हे सांगा फक्त. Function आपण असंच लिहितो ना, Hi, sir. म्हणजे sum of two numbers and then you a bracket दिलेलं आहे. So no one. Okay. So let me tell you the difference. Difference है, function you can independently call. You can call directly function such as print. Print is nothing but a function, right? इथे बघा, let me delete this. What is this? This is again a function because इथं functionचं नाव आहे आणि parenthesis आहे. So function are directly called, पण methods
The methods you call it on that data type. It is specific to that data type. I cannot write here something like unique, or if I write unique and try to pass some value here, that may not work, right? So it is not defined, unique is not defined like this, it doesn't happen. So you need to use it on some data type. So here we are using on a series data type. This can be used on the string or list also. You can use list dot unique. It will find out unique values in the list. So similarly here I'm using it on the series unique, right? So that's why we call such the functions which we want to call to that specific data types. Those functions are called methods. Okay, clear सगळ्यांना की difference between function and method, and this is a method which you need to apply it on the series. Again, you can directly find out unique values from your series. Okay, you don't even have to use that old logic such as आपण पायथन मध्ये कसं करायचो, हाऊ वी यूज टू फाइंड आउट द युनिक व्हॅल्यूज. कॅन एनीवन रिमेंबर? वी डिस्कस दिस इन द क्लास. गिरीश, स्नेहा, म्हणजे हाऊ टू फाइंड आउट युनिक व्हॅल्यूज फ्रॉम द लिस्ट, हे आपण बघितलं होतं. कॅन यू गाईज टेल मी? एक लॉजिक होतं याच्या मागे. यस, कसं करायचं पायथन मध्ये? हम्म, गिरीश, स्नेहा, होप यू आर प्रॅक्टिसिंग. और मध्ये जेव्हा सुट्टी होती आपल्याला, यू आर युटिलाइज्ड टाइम टू क्लिअर युअर बेसिक्स, कारण असाइनमेंट वगैरे सगळे आपले तुम्हाला अवेलेबल होते, राईट? सो इफ यू वुड हॅव सॉल्व्ड दोज असाइनमेंट, तुम्हाला इट वुड बी इझी टू अंडरस्टँड काय सुरू आहे काय नाही आहे. ओके, कॅन यू गाईज टेल मी हाऊ टू फाइंड आउट अ युनिक एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट? Yes, Girish, Sneha, no response. ओके, तुम्हाला आठवतंय आपण लिस्टला सेट मध्ये कन्वर्ट करायचं युनिक फाइंड आउट करण्यासाठी, बिकॉज सेट डझंट स्टोअर युनिक सॉरी डुप्लिकेट व्हॅल्यूज. डिड वी डिस्कस दिस लॉजिक? कोणतीही लिस्ट असेल त्याला सेट मध्ये कन्वर्ट करा, यू विल फाइंड आउट अ युनिक व्हॅल्यूज, राईट? येस, नो? Yes, sir. ओके. Okay, so that logic or that effort you don't even have to take. Here, simply use dot unique as a method. Convert that list into a set, convert that list into a series, and then use dot unique function. So once you use, you will get output such as unique. And there is one more function called n unique. N is nothing but count of the unique. Unique किती आहे ते count करतो. 5 unique values आहेत, right? So it has counted. So all these functions which we saw, standard deviation, median, null, values, जे काय असतील unique. So these are all available in this documentation, pandas.documentation. हे असं open होतं. So you can see here all those functions. खूप सारे functions आहेत. Let me go through it बघा. If we start using one by one each and every function, it is not possible to complete, right? Almost 100 plus kaitri functions आहेत. हे बघा, series dot data type, d type. So what it will do, it will return a data type of an object. Series dot name returns the name of the series.
हे सगळे फंक्शन तुम्ही ऍटलिस्ट इफ यू गो थ्रू वन्स, म्हणजे रोज तुम्ही ऍटलिस्ट प्रॅक्टिस केलं ना, इट विल बी व्हेरी व्हेरी इझी फॉर यू टू प्रोग्राम. तुम्ही इथे क्लिक करू शकता. इफ यू डोंट अंडरस्टँड, क्लिक ऑन दिस सिरीज डॉट डेटा टाइप. तर ते तुम्हाला एक्झाम्पल दिली इथे, pd डॉट सिरीज, इथे सिरीज बनवले त्यांनी एस नावाचं. मग एस डॉट डी टाइप्स असं लिहिलं तर तुम्हाला आउटपुट मध्ये इंटिजर 64 असा आउटपुट मिळतोय. ओके, go back, go and try anything whatever the function you like. Hundreds and hundreds function are there. इथे बघा, missing data handling, series.ffill, series.dropNA returns a new series with missing values removed. म्हणजे मीन्स नॉन एनए वैल्यू जो भी है आपके ड्रॉप हो जाएंगे, डायरेक्टली निकल जाएंगे उसमें से. सीरीज डॉट ड्रॉप एनए, सीरीज डॉट बी फिल, it will fill nan values with valid, backfill, front fill, interpolate, extrapolate. Those who studied the statistics, interpolation, extrapolation काय असते त्यांना माहिती आहे. So if you want to fill that values with interpolation, that they can directly use it here. Okay. Series dot is na काय मला डिटेक्ट मिसिंग व्हॅल्यूज आहेत की नाही, is null, null values आहेत की नाही. Likewise, you have a lot of इथं you can convert time series related काही असतील तर ते तुम्ही कन्वर्ट करू शकता. सिरीज df डॉट इज माउंटेड. ओके, थोडं जास्त टेक्निकल आहे बट आवर डे, सिरीज डॉट डेट टाइम dt डॉट मंथ, मंथ ऍज अ जानेवारी 1 ते डिसेंबर मंथ मध्ये ते कन्वर्ट करते. इयर ऑफ अ डेटा टाइम, डेट टाइम नावाचे प्रॉपर्टीज आहेत हे सगळे. जेव्हा तुम्ही डेट टाइम मध्ये कन्वर्ट करता काही नंबर्स, यू कॅन यूज ऑल दिस, डे ऑफ अ इयर, डे ऑफ इयर. So lot of methods are available, but इसका use same है. यहाँ पे you can take different date and times and you can use all these methods. Okay, clear? All these properties are applicable on series. Series वरती हे सगळे properties applicable आहेत. Okay, string handle करण्यासाठी सिरीज डॉट स्ट्रिंग डॉट सेंटर, सेंटरला ते स्ट्रिंग आणून देतात तुम्हाला. ऑर कॅपिटलाइज, स्ट्रिंग डॉट कॅपिटलाइज हे फंक्शन आपण बघितलंय राईट, str डॉट कॅपिटलाइज, तर सगळे लेटर कॅपिटल मध्ये कन्वर्ट होतात. सो दॅट यू कॅन यूज इट हिअर इन द स्ट्रिंग सिरीज डॉट डॉट कॅपिटलाइज, हे कॅपिटलाइज करण्यासाठी तुम्ही वापरू शकता. ओके, क्लिअर सगळ्यांना how we are using pandas or series properties? Yes, no? Yes, sir. Okay, so will you be able to practice यातल्या at least, तुम्हाला जसं आधी सांगितलं होतं होमवर्क मध्ये, like earlier when we were studying methods, आपको हर एक डेटा टाइप के 5 मेथड्स पढ़ने के लिए बोला था और 10 मेथड पढ़ने के लिए बोला था, राइट? सो सिमिलर way you can create or you can start reading 5 methods every day. ओके, क्योंकि ये बहुत सारे मेथड्स है एंड अल्टीमेटली यही सीखना है. देयर इज नथिंग मेजर डिफरेंस और नथिंग ग्रेट वी नीड टू डू. वी नीड टू यूज ओनली दीज फंक्शंस और मेथड्स. तो आपको ये याद रहने के लिए यू कैन यूज डे टू डे 4-5 फंक्शंस आप पढ़ सकते हो, उसका यूज कर सकते हो. ओके, what it will do is it will create or it will what we say, इससे आपका प्रोग्रामिंग स्किल्स बढ़ेगा. ओके, आपको कुछ हार्डकोर प्रोग्रामिंग नहीं करना है. यू डोंट इवन हैव टू डू सम लॉजिकल, कहीं डेटा स्ट्रक्चर यूज किया है और कहीं एल्गोरिदम बिल्ड कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है. एज ए एनालिस्ट आपको डेटा क्लीनिंग, डेटा मैनिपुलेशन, ऐसे छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए, राइट? तो वही हम सब कुछ यहाँ पे वी आर गोइंग टू डू यूजिंग सीरीज हो या डेटा फ्रेम. इसी का एक्सटेंशन है सी डेटा फ्रेम, दैट विल सी नाउ. Okay, so clear. So will you be able to at least understand new 4-5 नवीन 4-5
मेथड्स फंक्शन्स वाचणार का रोज? How to use the method, you know, right? Unique value है, like how to use, but उसका use कैसे करना है, capitalize, upper, lower, all this function we have studied in the list. उसी function को use करना है. That's why I'm covering different functions in each data types. Okay? Okay, so this is it for the series. So we'll see the next data structure or data type in pandas, which is called a data frame. Okay, so we'll see, before going ahead, we'll see the difference. First of all, we'll see how to create the data frame. Our sequence of learning will be same. How to create data frame, how to access the data frame, then mathematical operations, logical operations, then we'll see some methods, right? All these logics will remain same, will not understand or will not deviate from how we are learning, and then we'll cover some basic application of pandas in with help of some we'll start loading the data from either from the server or from the file, and then we'll start learning new things about it, as in how to use data frame for cleaning, data handling, manipulation, so on and so forth. Okay, clear again now how to use so next is Yes, sir. okay, next we'll see is data frame. So next data structure or data type in the pandas is data frame. So that we will study it here. So one is list. Again, we'll take list one. Ideally, we start with the df. Okay, list one is equal to this is a list, right? ये लिस्ट ये लिस्ट है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है एंड देन आई हैव यूज्ड कॉमा हियर, डिफरेंस कॉमा मल्टीपल, और उसके अंदर वैल्यूज है. ओके, अलग अलग वैल्यूज मैंने लिखा है, these are nothing but elements of the list. Then df is equal to pd dot data frame. Pd dot data frame, pd is nothing but pandas, and इस बार हमने डेटा फ्रेम यूज किया है इंस्टेड ऑफ सीरीज. बाय द वे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड डेटा फ्रेम? और हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था सीरीज कब यूज करना है, डेटा फ्रेम कब यूज करना है, पैनल कब यूज करना है. Okay, okay, let it be. Let's see how to create a data frame, and then I will explain you where we are using. See, here data frame में मैं pass कर रहा हूँ list. I am passing it a list here. So output में मुझे क्या आएगा, df. df is nothing but a data frame. So I am printing that data frame called print df. So one thing to observe here is d and f are capital. D and F are capital here. ये देखिए, ये D and F दिख रहा है क्या? ये D and this F is capital. सीरीज में क्या होता था, S कैपिटल रहता था, राइट? S E R I E S ऐसे आता था, S कैपिटल रहता था. यहाँ पे डेटा D and F are capital डेटा फ्रेम में. So if I execute, I will get output. इस df नाम के वेरिएबल का टाइप चेक कीजिए, प्रिंट टाइप ऑफ df डेटा फ्रेम. Okay, so what you will get output as, ये तो this is nothing but output, but ये तो सेम दिख रहा है. सीरीज सीरीज का आउटपुट देखते हैं कैसा आया था. लेट, ये देखिए सीरीज में भी ऐसे ही आउटपुट आया था कुछ, ये देखिए यहाँ पे, राइट? दोनों का आउटपुट सेम है. कैन एनीबडी स्पॉट द डिफरेंस? लेट मी एग्जीक्यूट दिस लाइन देयर, कॉपी, नीचे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ एंड देन यू टेल मी द डिफरेंस. ओके, इसके ऊपर मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ. चलो यहाँ पे ये ऊपर वाला क्या है, सीरीज है, राइट? सीरीज वन है देखिए, और नीचे का डेटा फ्रेम है. तो क्या डिफरेंस है? कैन एनीबडी टेल मी द डिफरेंस? इसमें क्या डिफरेंस, इसमें
और इसमें? Sir, it has started from zero. ओके, हियर इथं, Ah, yes, sir. ओके, एंड हियर इट इज नॉट देयर, है ना? सो दैट जीरो इज नथिंग बट अ कॉलम नेम और कॉलम नंबर, जिथं दीज आर नथिंग बट इंडेक्सेस, राइट? मतलब ये मैं बोल सकता हूँ रोज है, ये रो के नंबर। एक्सेल देखा है क्या आपने? एक्सेल में क्या रहता है? ये रो रहता है, राइट? एंड देन दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट अ कॉलम, कॉलम। मतलब यहाँ पे कुछ एक नंबर, यहाँ पे और एक कॉलम आएगा, यहाँ पे कॉलम आएगा, यहाँ पे कॉलम आएगा, तो ये जीरो, ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा। ऐसे ही ये सीरीज है, मींस डेटा फ्रेम हम यूज करते हैं जहाँ पे रो एंड कॉलम हो, जहाँ पे टू डायमेंशनल डेटा और टेबल टैब्यूलर डेटा है, तो आई क्रिएट अ डेटा फ्रेम। और मुझे टेबुलर डेटा नहीं चाहिए, एक ही सिंगल लाइन है और सिंगल कॉलम है, तो आई यूज अ सीरीज, राइट? यही देखा था हमने, होप यू रिमेम्बर। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ, सीरीज इट इज अ वन डायमेंशनल डेटा टाइप, मतलब इसमें एक कॉलम हो सकता है सिर्फ। देन इट इज टू डायमेंशनल अरे, टू डायमेंशनल मतलब रोज एंड कॉलम, आल्सो कॉल्ड एज अ टेबल। मतलब डेटा फ्रेम को टेबल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें रोज एंड कॉलम्स है। Okay, then there is a three dimensional data types, which is we'll see panel वगैरह क्या होता है, but clear difference समझ में है, सीरीज क्या रहता है, डेटा फ्रेम क्या है? 99.99 टाइम्स आप डेटा फ्रेम यूज करोगे, 99% in your real world is used a data frame. They will not touch to any series or any different data type, because everything is possible in data frame. आपने अभी तक जो भी कुछ सीखा है, सीरीज के मेथड्स हो, नंपाई के फंक्शंस हो, लिस्ट के कुछ मेथड्स हो, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, lambda function, user defined function, all those functions are applicable on series or sorry on data frame. मतलब सारे अभी तक जो हमने सीखा है सब कुछ यहाँ पे एप्लीकेबल होता है इन द डेटा फ्रेम यूज करके। ओके, क्लियर? विल सी जब हमारा फाइनल प्रोजेक्ट वो कार सेल्स का डेटा, दैट्स अ डेटा, सो उसमें हमने एनालिसिस किया है, सो वी विल सी ऑल दिस मेथड्स और एवरीथिंग इज डन यूजिंग अ डेटा फ्रेम। क्लियर? Yes, sir. सो हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम आपने देखा, उसका टाइप, सी मल्टीपल डेटा विद इन द टेबल, इनसाइड अ टेबल आई कैन एग्जीक्यूट। ये देखिए, सी यहाँ पे दिख रहा है क्या क्लियरली? This is rows, these are the columns, 0 1 2 3 4 5, और ये क्या है? रो है। ये मेरा टेबल बन गया है ना? So likewise you can call all the functions or all the tables. This is two dimensional data, मतलब रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड होता है। यही हमने अरे में भी किया था, याद है क्या? हमने ऐसा अरे एग्जीक्यूट किया था, np डॉट अरे, फिर ये पास किया था, फिर अरे के प्रॉपर्टीज, एन डायमेंशनल अरे, शेप, साइज, ऐसा कुछ बहुत कुछ निकाला था। वो कितना मुश्किल है, यहाँ पे देखिए डायरेक्टली यू कैन यूजिंग अ df2, ऐसा df2 लिखोगे तो दिस इज नथिंग बट डेटा फ्रेम 2। ये कुछ वेरिएबल का नाम है बाय द वे, है ना? सो यू कैन एग्जीक्यूट। सिमिलरली यू कैन क्रिएट डिक्शनरी के, by using dictionary also you can create a data frame. सो व्हाट यू हैव डन इज सीरीज लिया है, दो सीरीज, और वो दोनों सीरीज का डिक्शनरी में किया है। माई डिक्शनरी इज इक्वल टू कॉलम नेम, देन सीरीज, कॉलम टू, देन सीरीज, और इस माई डिक्शनरी का एक डेटा फ्रेम बनाया है कॉल्ड pd डॉट डेटा फ्रेम। इनसाइड दिस यू हैव यूज्ड अ माई डिक्शनरी, और df3 ऐसा नाम दिया है इसको। सो df3 इज बीन एग्जीक्यूटेड हियर। ये देखिए, दिस इज हाउ इट लुक्स, column 1, column 2, 0 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है आपको?
यहाँ पे देखिए नैन वैल्यू है, राइट, क्योंकि ऊपर ज्यादा वैल्यू है नीचे कम है। ऐसे ही आपका टेबल दिखता है ना, एक्सेल में जब आप बनाते हो टेबल ऐसे ही दिखता है, राइट। यहाँ पे सिर्फ कॉलम वन की जगह ए बी ऐसे नंबर्स रहते हैं, एंड यहाँ पे रो के नाम सेम है, राइट। सो आपको कोई भी टेबल पाइथन में लोड करना है, टेबल एज इन कॉलम एंड रो का इंटर रिलेशन, इंटर कनेक्शन आपको स्टोर करना है, मेंटेन करना है प्रोग्रामेटिकली, सो यू कैन डू दैट। क्लियर, यहाँ पे आप कर सकते हो, ये ऑलरेडी बना है, राइट। आई कैन ऐड इनफाइनाइट कॉलम्स टू दिस नाउ, एज इन कॉलम 1 2 3 4 जितने भी कॉलम चाहिए वो ऐड कर सकता हूँ। आई हैव अ रो नंबर, आई हैव अ कॉलम नंबर। क्लियर, इसी प्रॉब्लम के साथ हमने स्टार्ट किया था numpy, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब हाउ टू मेंटेन द रिलेशन बिटवीन द टू कॉलम्स। जो एक्सेल फाइल में मेरा टेबल है उस टेबल को मुझे रीड करना है, तो वो कैसे करना है, दैट वी स्टार्टेड विथ, राइट। क्लियर, हेच बघितलं होतं आपण, राइट। यस, नो, गिरीश, स्नेहा। Okay, the most common way to create data frame is using files such as CSV, Excel. Generally आपण we create hardly कधीच नाही करत, म्हणजे लिस्ट किंवा डिक्शनरी वापरून खूप कमी वेळा आपण सिरीज और डेटा फ्रेम क्रिएट करतो. Maximum number of times you will use such lines. तेव्हा कोविड अंडरस्कोर डीएफ मी एक व्हेरिएबल क्रिएट केलं, कोविडचा डेटा आहे म्हणून कोविड अंडरस्कोर डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड सीएसव्ही नावाचं एक फंक्शन वापरलं मी. दॅट फंक्शन आय पास, इथे नाव पास केलं त्या फाईलचं. काय फाईलचं नाव आहे, कोविड डे वाईज टू सीएसव्ही असं काहीतरी फाईलचं नाव आहे. दॅट आय पास, इफ आय एक्झिक्यूट, okay, this file is not there, error, no such file or directory, pandas dataset. Why? Because you need to ensure तुमची ही जी फाईल आहे मास्टर फाईल, लाईक दिस फाईल इन विच फोल्डर हे फाईल आहे त्याच फोल्डर मध्ये तुमचं डेटा पाहिजे, और यू कॅन गिव्ह इट अ डिफरंट व्हॉट वी से पाथ इथं तुम्हाला द्यायला लागतो. लेट मी चेक, इथे माझी दिस इज माय डे 5, दिस इज माय लायब्ररी, और हे माझं फाइल्स लोकेशन आहे. इफ आय वॉन्ट टू रीड सम फाइल, लेट्स रीड एनी फाइल. ओके, दिस इज द फाइल आय गेस, कोविड डे वाइज डेटा. लेट मी कॉपी दिस आणि माझ्या मेन फाईल मध्ये स्टोअर करतो इथे. वाय? बिकॉज माझं पांडाची फाईल पण इथेच आहे, राईट. आणि मग व्हॉट आय नीड टू डू इज I need to select this file and copy the path. How we can do? Okay, go to here, home. Home मध्ये files. If I refresh, okay, just a second. Okay, this is my file, city wise data. Okay, this is XLS file. I need a CSV. Wait, a CSV file कुठे आहे का बघतो मी. By the way, CSV वेगळं, XLS वेगळं. XLS is Excel file. CSV means comma separated file. Let me delete this and add CSV file. Pandas dataset इथे. Okay, this is a CSV. Comma separated values, right? इथे दिसेल तुम्हाला हे बघा. So let me copy this and paste it into my directory. या main file मध्ये we can save it here. And then from here I can get it. एकदा reload करा तुम्ही home tab मध्ये, right. Home tab मध्ये जाऊन reload केलं तरी तुम्हाला, or else you have to give other path. First we'll study it. इथे click करा, copy path आहे का इथे, click on this copy path and go in your program and paste it the path here.
पेस्ट झालं. कोविड त्याच्या फाईलचं नाव आहे आणि पाथ आहे. इफ आय रन दिस नाव एक्झिक्यूट झालंय हे, आणि इफ आय चेक द टाइप ऑफ कोविड तुम्हाला काय मिळेल, डेटा टाइप. आणि कोविड डेटा फ्रेम बघा इथे, हे बघा टेब्युलर डेटा स्टोअर झालं, डे, न्यू केस, न्यू टेस्ट, हे वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज आहेत. आणि दिस इज आर सिरीज 246, हा रोज अँड कॉलम आहे. लेट मी ओपन अँड शो whether it has been loaded exactly or not. हे एक्सेल फाईल तुम्हाला, एक्सेल फाईलचा सेम डेटा आपल्या पायथन मध्ये लोड झालेला आता है ना. म्हणजे हेच टेबल तुम्ही मेंटेन करायचं होतं राईट तुम्हाला. काल आपण जे डिस्कस केलं, जे रोज अँड कॉलम मधला रिलेशन तुम्हाला मेंटेन करायचं आहे. ओके, तर ते मेंटेन झालेलं आहे. यू कॅन क्लिअर इट हिअर, क्लिअरली यू कॅन सी द टेबल हिअर. ओके, अंडरस्टूड. Yes, sir. ओके, जर आता मला सांगा, जर फाईल कुठल्या दुसऱ्या डायरेक्टरी मध्ये असेल तर, म्हणजे याच फोल्डर मध्ये नसेल तर व्हॉट आय कॅन डू इज आय नीड टू कॉपी द पाथ ऑफ दॅट फाईल. चला माझी फाईल आहे या दुसऱ्या फाईल मध्ये कुठेतरी. लेट मी गेट द CSV फाईल आहे का. बाय द वे, इफ वॉन्ट टू रीड एक्सेल फाईल, इथे कोविड डे वाईज आहे. यू कॅन सी कोविड डे वाईज डेटा और कार सेल्स इट्स टू बिग. एक्झाम मार्क्स पिओ टेबल काय बघूयात. वेगळी फाईल असेल वेगळ्या फोल्डर मध्ये. आता सपोज आय वॉन्ट टू गेट दिस फाईल. ओके, ही फाईल मला पिक करायची आहे. ओके, सो व्हॉट आय कॅन डू इज आय नीड टू गो अँड कॉपी द पाथ हिअर. कैसे, राईट क्लिक, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मधून इथून पण तुम्ही क्लिक करू शकताय बघा, इथे दिसेल तुम्हाला कॉपी. यू नीड टू कॉपी, और आपको ये फाइल, यू कैन कॉपी द पाथ हियर समवेयर. Okay, there is a no path. So what we can do is we'll go with this method only. Properties, path और location तुम्ही कॉपी करून घ्या manually. Copy. Okay, इथे पण आहे. ठीक आहे. So what you can do, you go and file copy path, आणि तुम्ही इथे लिहू शकता covid data frame 2 pd dot read csv, आणि इथे r raw string तुम्हाला द्यायची, आणि you need to pass your path as a string तुम्हाला पास करायला लागते इथे. ओके, बाय द वे बॅच 4 क्लास नाही आहे इथे. स्पेस देऊन तुम्हाला फाईलचं नाव पण कॉपी करायला लागेल. सॉरी, फाइल का नाम क्या है, दिस वन राइट. अगेन प्रॉपर्टीज, दिस इज माय नेम, कॉपी and paste it here. I doubt whether it works. There are a lot of blanks in the names. Let's see. So COVID df2. Okay, error येतोय because directly I cannot use no such file or directory. Okay, what it is saying is you need to give us .csv. The csv असेल .csv. CSV is file type I, right? Huh? Okay, you can see comma separated value. You can directly pass like this and then execute. हेच होतं राईट तुमच्याकडे. दिस इज द डेटा, यू कॅन सी नाउ. तर डायरेक्टली तुम्ही ते पाथ देऊ शकता ऍज अ स्ट्रिंग. ओनली मेक शुअर यू पास आर हिअर. आर इज अ रॉ स्ट्रिंग. रॉ स्ट्रिंग काय करते, स्पेस आहे ना ब्लँक, याला इग्नोर करतं. ऑर एल्स काय होतं ना, ते कळत नाही प्रोग्रामला की स्पेस का दिलंय वगैरे. इट डज नॉट फाइंड आउट द एक्झॅक्ट पाथ. क्लिअर, कळालं सगळ्यांना की व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन सिरीज अँड डेटा फ्रेम, अँड देन हाऊ Yes. क्रिएट डेटा फ्रेम युझिंग लिस्ट अँड युझिंग ऍक्च्युअल फाइल्स. आता याच्यावरती कशा ऑपरेशन करायचे, काय करायचे, विल सी टुमॉरो. विल नॉट रन सो क्विकली, बट आपण विल स्टार्ट अंडरस्टँडिंग वन बाय वन नाउ. ओके, क्लिअर. Yes, sir. Okay, so we will take a pause here. We'll connect on Monday then from here onwards.
Okay. Baki please do convey the message. It is an offline batch, so they have to be offline.